Welcome to Unacademy and welcome to the class, guys. So in this session I'm going to discuss the questions on linear equation and quadratic equation, where I'll be discussing the theory part of quadratic equation in detail first, and then we'll practice the questions. So just let me check if everything is okay. Yes, good to go. So let's begin. Those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 80 years for CAT and other MBA entrance exams. I train the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. And I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. So the agenda for today's session, guys, concept में मैं discuss करूँगा quadratic equation in complete detail. So those who don't know the basics of this is the session for them, and I'm going to discuss all the important points starting from the basics to advanced related to the quadratic equation, and after that we are going to practice the questions. So let's begin. Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to this channel, Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram group, which is CAT4MBA, for the PDF notes of the sessions. Those we conduct on YouTube, as well as for the sessions those we conduct on Unacademy platform. If you want to attend the special sessions, these are completely free sessions. You can attain just by downloading and installing the Unacademy learning app. And if you are willing to go for the mock test facilities like mock test and direct interaction with the educators and attain their plus courses, you can subscribe to these plans. And I recommend to go for 1 year or 2 year plan. 1 year plan is close to 16,000 and 2 year plan is close to 19,000. And also you can avail 10% of discount if you use this code SHYAM1. It is SHYAM numeral 1. So those who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, do not forget to use this code SHYAM1. So let's begin, guys. Let's understand quadratic equation in detail. So as I said, I'll take you through the basics first. Okay, so an algebraic equation of the form ax square plus bx plus c is called quadratic equation. That is the general form of quadratic equation. So here's the meaning of quadratic. Word quadratic means QUA, it is 2, and dratic means the order. So basically quadratic is basically a expression where the order of the expression is 2. Okay, so let's begin. So this is the single variable equation where a की variable रहेगा, a, b, c are the constant. Coefficient of x square is a, x coefficient is b, and c is the constant. So equation, quadratic, general form of the quadratic equation is, of course, ax square plus bx plus c is equal to 0. In last session we have discussed what is expression, what is equation. Hopefully you remember that. Okay, now understand one thing, guys. If we draw a graph for quadratic polynomial, always remember one thing: we cannot draw the graph for quadratic equation. We always draw the graph for polynomial, because in quadratic expression there is only one single variable. So we take y is equal to this expression ax square plus bx plus c, and we draw the graph for the quadratic polynomial. So the graph of quadratic polynomial is always a parabola. Okay, so I'll just show you few things. If this is x-axis and this is y-axis, x-axis and this is y-axis. Okay, so अगर quadratic equation के कुछ roots है तो वो roots पे वो intersect करेगा. So graphs could be like this. It can be even invert भी हो सकता है. So we'll discuss the nature of the graph depending on the coefficient and the values of a, b, c. Basically इस पे depend करेगा कि इसका graph कैसे आता है. We'll discuss that in detail later. So let's proceed for this. So this is the parabola. We'll understand how this graph comes. Okay, so while plotting the graph, we take y is equal to the quadratic expression, and we get the values of that polynomial and by putting the values of x. So if we take one example, we'll have one example as well for that. Okay, but first of all, let's understand, to draw the graph we have to understand what is the roots of the quadratic equation. So you must have
well known with this formula, that is this is the formula method to get the roots of the quadratic equation. So any equation of the form ax square plus bx plus c, if you want the value of this equals to 0, this is the quadratic equation. And if you want to value of x such that this satisfies this equation, the value for x is minus b plus minus b under root of b square minus 4ac upon 2a, where discriminant part we call b square minus 4ac as the discriminant part. Then we have methods to calculate the roots. Okay, first of all let's understand the nature of roots. So guys, अगर कोई भी quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0, and we know the roots of this quadratic equation, that is the values of x that will satisfy this equation, will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Now understand that delta is the discriminant part, which is b square minus 4ac. इस पे डिपेंड करेगा इसके रूट्स कैसे आएंगे. Now understand one thing, if delta is less than 0 means this is negative. If the discriminant part is negative, of course इसमें अगर तुम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे. You won't get any real value for this if the discriminant part is less than 0. तो हमें रियल रूट्स कब मिलेंगे गाइस? जब डिस्क्रिमिनेंट पार्ट या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0. या तो 0 रहेगा तो चलेगा, दिस विल बी 0, देन यू विल गेट द आइडेंटिकल रूट्स, राइट. इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन तुम्हें दो रियल रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग, if delta is greater than equal to 0 then we'll get the real roots. Okay, so let's consider two cases. If delta is equal to 0, अगर डेल्टा 0 है तो तुम्हारा रूट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, एक सिंगल रूट मिलेगा. प्लस माइनस ये करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज 0. तो डेफिनेटली एक आइडेंटिकल रूट्स यहाँ पे मिलेंगे, दो डिफरेंट रूट नहीं मिलेंगे, ओनली वन रूट हम इसको बोल सकते हैं, राइट. सो हियर इज द एक्सप्रेशन. इफ यू सॉल्व दिस, बेसिकली दिस इज x minus 2 whole square equals to 0, so you'll get x as 2. In the previous case, if you observe this equation, x square plus x plus 1, you won't get any root for this equation because because the value for delta, which is minus 1 square minus 4 into 1 into 1, which comes out to be negative value 4 minus 3. तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस 3 आएगा, इसलिए इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे फॉर दिस, राइट. एंड व्हेन यू गेट द डिस्टिंक्ट रूट एंड टू रियल रूट्स, सो आइडेंटिकल रूट्स हमने कब डिसाइड किया? आइडेंटिकल रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट पार्ट इक्वल्स टू 0 होगा, तब हमें मिलेंगे आइडेंटिकल रूट्स. द रीजन बीइंग बिकॉज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो तुम्हारा b माइनस बी अपॉन 2a विल बी द ओनली वन रूट यू विल बी गेटिंग फॉर दिस. Just by looking at the formula you can decide this thing. Really easy and interesting things to know about the quadratic equation. And मैं कुछ दूसरी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, so be careful and let me know in case of any doubt. These are really important thing. You should be able to understand the nature of the roots. देखो guys, simple logic एक बार let me repeat once. Plus minus under root of b square minus 4ac, this is the formula. And we know delta is b square minus 4ac, sorry it's 4ac, b square minus 4ac. so depending on this values, अगर ये नेगेटिव आता है तो कोई रूट ही नहीं आएगा, बिकॉज मीन्स रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे. अगर डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम 0 रख दो, तुम्हें एक ही रूट मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a, यू विल गेट द यूनिक रूट. ओके, एंड अगर वो 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो तब तुम्हें डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे एंड द रियल रूट्स मिलेंगे इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. द नेक्स्ट केस, इफ यू लुक एट दिस, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, you will get two real roots and the distinct real roots. Right? And one more thing, if b square minus 4ac is greater than 0 at the same time, if this is the perfect square, if it's perfect square,
then definitely you'll get the real distinct roots as well as real and rational. I'll just add one thing, two distinct real roots and the rational roots हमें यहाँ पे मिलेंगे if b square minus 4ac is greater than 0 and perfect square. That's quite obvious, and just by looking at the roots formula you can decide this thing. The nature of the roots depends on the value of b square minus 4ac, which is the discriminant part. Let's go for the next one. Okay, now some of the roots, guys, listen, I'll just quickly tell you ये कैसे आता है and how to remember that. Okay, so let's say alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Now understand one thing, how we solve the quadratic equation, that is quite important when we use the factorization method. So let me quickly take you through one example. Let's say I want let's take one example, x minus 1. I'll form the quadratic equation by using these two factors. Okay, I'll just go in the reverse way. If I multiply x minus 1 into x minus 2 equals to 0, so definitely this will be the roots of the equation will be x equal to 1 or x equal to 2. या तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तब ये 0 हो जाएगा, या तो मैं 2 रखूंगा तब 0 हो जाएगा, right? The same way, if we factorize this and if we expand this and we'll frame the quadratic equation, this is the exactly the reverse way you solve the quadratic equation. Okay, so this is x square minus x minus 2x, it will be minus 3x plus 3 equals to 0. So most of you must be remember this thing related to the solving the quadratic equation. A into c, here a is 1, c is 3 and b is minus 3. So what we do, guys, a into c, the product is 3 and summation, the sum is minus 3. So the numbers whose summation is minus 3 and the product is 3, we can get the roots as minus 1 and minus 2. If you multiply this, sorry, this will be plus 2 only. The product is 2 and the summation is minus 3. The roots are minus 1 and the values are minus 1 and minus 2, and then we reverse the sign, x equal to 1 and x equal to 2. That's how we do. तो मैंने यहाँ पे exactly same चीज यूज करके रिवर्स में एक quadratic equation फ्रेम किया है, just to make this point clear. Okay, now the same way, if the roots of the quadratic equations are alpha and beta, so I can have the quadratic equation as x minus alpha into x minus beta equals to 0. And this will be x square minus alpha into x minus beta into x plus alpha into beta equals to 0. Then if I compare this with the general form of the quadratic equation, which is x minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. The thing is, if I compare this with ax square plus bx plus c equals to 0, now look at this. This is the sum of the roots. So where value of if I divide it by a, you will be getting x square plus b by ax plus c by a equals to 0. I divided it by a, and just by comparing these two equations you can get the sum of the roots and the product of the roots. So if you get the value of alpha plus beta, that is the sum of the roots will be minus b by a, and the product of the roots will be c by a. That's how you can remember. That's really important and easy thing related to the quadratic equation that you can remember. Okay, then this is something related to the graph. C indicates the y-intercept. That simply means whatever the value of C
वहां पे पॉलिनोमियल का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, दैट ग्राफ विल इंटरसेक्ट y एक्सिस at C where x equal to 0. Definitely that's, even if you put x equal to 0, you will get y equal to C. That is the y intercept. That's why we call C as y intercept. If A is positive, the graph will be upward moving, and if A is negative, the graph will be downward moving. These key points you need to remember while you draw the graph. Then the roots are called the x intercept, the values of x at which the graph intersect x axis. So if you take the same example, let me take the same example, x square minus 3x plus 2 equals to 0. If you solve this, x square minus 3x plus 2 equals to 0, we know the roots for this equation is 1, x equal to 1, or x equal to 2. So A is positive, so parabola will be upward moving here. And if we draw this, this will definitely cut the x-axis at 1 and 2. So 1, this is 2. So the graph will look like something like this, and this will cut the y-axis at C. C का value यहाँ पे coincidentally ये भी 2 है. That's the value of C. Will cut y-axis at 2. This will be the graph for this polynomial, quadratic polynomial. This graph is of y is equal to x square minus 3x plus 2. So we took p of x as y and we draw the graph for the quadratic polynomial. Remember that always, we cannot have the graph for quadratic equation. Okay, so the points to remember: if A is positive, this will be the graph, means graph will be upward moving. अगर ये negative होता तो graph downward moving होता, something like this. Okay, and always remember roots जो है वहां पे ये polynomial का graph x axis पे कट करेगा at the roots, and y axis को कट करेगा intercept, that is y intercept, which is C. So ax square plus bx plus c में से जो c का वैल्यू होगा, that is the y intercept. Let's move to the next thing. चलो quickly let's solve few questions on quadratic roots की equation. Guys बिल्कुल easy है, so I'll just quickly proceed with the solving part. Listen, how to solve this? This is actually the higher order polynomial, which is x to the power 4, but what we can do, you can put x square as, let's say, y. So if I put x square equal to y, what will be this equation? It will be y square minus 2y plus 1, and will equate to 0 to find the roots of this polynomial. So let's get the product of the roots, product of the numbers we want. This is a into c. The product must be equal to a into c, and first of all we need the numbers whose product is a into c, which is 1 here, and the summation is minus 2. So definitely the numbers are minus 1 into minus 1, minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा, minus 1 into minus 1 will be plus 1 here. And after that we are supposed to change the sign to get the roots, to get the value of y. So value of y will be 1 here, or simply अगर तुमने observe किया होगा, this is y minus 1 whole square. So definitely if this equals to 0, y has to be equal to 1. That is quite simple quadratic equation. So if y is 1 and x square is y, so x must be x 1 भी हो सकता है और minus 1 भी हो सकता है. तो roots for the values of roots for this polynomial will be 1 or minus 1. The same way, try for this. We can put the value of root x as y here, and I can get the quadratic polynomial from here as 4y square, because x will be y square then, minus 4y plus 1 equals to 0. Let's get the value of y first. Multiplication we want
4 into 1, that is 4, and addition we want it as -4. So the numbers whose multiplication is 4, that is -2 into -2. So again I'm getting the value of y as 2, but understand here the y square's coefficient is not 1, so we have to divide it by 4. Change the sign and divide it by a. That's the rule to solve it. Okay, so this is 1 by 2, or you can go by the factorization and simply factorization में हम क्या करते हैं, we write this as 4y square minus 2y plus 1 equals to 0. You'll get this as 2y into y minus 2 here. I'll take -1 common and it will be 2y minus, sorry, it is 2y minus 1. So this is how you can solve and get the value of y. It will be definitely 1 by 2, and if y is 1 by 2, the value of x will be 1 by root 2. Try for this again, the similar front here we can put x to the power 1 by 3. देखो, it is x to the power 2 by 3. We can write it as x to the power 1 by 3 square minus x to the power twice of x to the power 1 by 3 minus 3 equals to 0. Then I can put x to the power 1 by 3 as y. So this equation becomes y square minus 2y minus 3 equals to 0. And we want the numbers whose multiplication is -3 and the addition is -2. That is -3 into 1, -3, and -3 plus 1 will be -2. So the roots are 3 or -1, and change the sign. So these are the value of y. So x will be equal to, you can put here x must be equal to y to the power 1 by 3, and we know the value of y, and that's how we get the value of x as well. Hopefully you understood the main idea. To solve this question is we are supposed to put the value of x to the power 1 by 3 as y and get the quadratic equation, and that's the normal solving for the quadratic equation after that. Okay, now let's solve few questions in a reverse way, where the questions are like the sum of the roots of the quadratic equation is 3 while the sum of the square of its roots is 7. Find the equation. So we know alpha plus beta is 3, and sum of the squares of the roots, that simply means alpha square plus beta square is 7. So try to give it a try. If you can solve this, see. ठीक है, हमारे पास रूट्स अगर दिए हैं तो हम रूट्स से इक्वेशन बना सकते हैं. क्या इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा if you do, and you can get this equation. Okay, and if you solve this, we have the general form in terms of root as well, which is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली हमें अल्फा प्लस बीटा तो पता है 3 है, मैं अल्फा इंटू बीटा या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगा.
Okay, so how to get that? What I can do is, if I do alpha plus beta whole square, which must be equal to 3 square, which is 9, and we know a plus b whole square formula अगर हम यहाँ पे use करेंगे, alpha square plus beta square plus twice of alpha into beta equal to 9. So alpha square plus beta square, it is given as 7. So twice of alpha into beta is 9 minus 7, which comes out to be 2. So I am getting alpha into beta as 2. So you'll get the equation as x square minus 3x plus 2 equals to 0. Right, that's the correct answer. X square minus 3x. Sorry, not 2. It will be 1. I'm getting alpha into beta as 1. Sorry. So x square minus 3x plus 1. Yes, right, Mega, that is right. Should be 1 because this was twice of alpha into beta. Right. Now if you solve this equation for alpha and beta, then you'll get the values such that alpha plus beta will be 3 and the square must be alpha square plus beta square. Of course it will be 7. Okay, anyways, so that's the way you can solve. The main idea to solve this question, get the value of alpha into beta, and before that you should know this general form of quadratic equation in terms of the roots. And hopefully तुम्हें समझ में आया था, मैंने ये अभी एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे आया है, एंड हमने इसकी रिलेटेड ये भी देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. Just let me check if I'm able to see the comment. Okay, that's fine. Let's move to the next. Try for this. Find the quadratic polynomial with an integral coefficient, first thing, having both the sum and the product of the roots as 4.5. Again, quite simple thing. Again, ये सारे concept question है guys, need not to be worried about. So we know sum of the roots is alpha plus beta is 4.5 and alpha into beta is also 4.5. So the roots will be x square minus 4.5x plus 4.5 equals to 0. But हमें integral coefficient चाहिए. That will be 2x square minus 9x plus 9 equals to 0. This is the equation with the integral coefficient. Even you can multiply again and get the n number of equations, whatever you want, but this is just one of the solution. Okay, let's move to the next thing. Try for this. I'll give you 1 minute to think about this. I want you to try the questions now, guys. There are few questions जो normally typical CAT question types तुम इसे बोल सकते हो. What is the range of the values of k where the polynomial 2x square plus kx plus 2 will have two real roots? So that's part A. We are going to solve first. Two real roots. How many of you remember the condition for the real roots? What is the condition for the real roots? The discriminant part. देखो, जब b स्क्वायर माइनस 4a से नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे. ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो एक ही रूट आएगा. सो व्हाट आई विल डू, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0. Do you know this? Yes, no?
इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस गाइस? ये क्लियर है क्या? पहले तो क्या क्या कंडीशंस होंगे? वन रियल रूट कब आएगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा तो एक ही रूट मिलेगा। एंड इफ टू रूट्स कब आएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? एंड नो रूट्स कब आएंगे? Imagine no real roots is actually, so no real roots, that simply means b square minus 4ac is less than 0। अगर वो 0 से कम है तो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में ये जाता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी निकलेगा क्या? दैट वोंट बी अ रियल वैल्यू, सो इसलिए उसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे इन दैट केस व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। तो ये सिंपल तीन कंडीशंस है, ये तीनों कवर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गेट द वैल्यू ऑफ, गेट द रेंज फॉर द वैल्यूज ऑफ के। तो पार्ट ए में क्या रेंज आएगा पहले ये बताओ? व्हाट विल बी द रेंज इफ दिस इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बेसिकली? दैट सिंपली मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 must be greater than 0. Okay, so what are the values of k mega? Tell me. K must be greater than 4 into 4 16. K square must be greater than 16. What is the range of the value for k? k square greater than 16 कब आएगा? जब k greater than 4 होगा। और एक और चीज है, k अगर लेस देन -4 है ना तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर्स भी +4 -4 नहीं है। यस राइट, दैट सिंपली मीन्स यू मीन टू से k इज ग्रेटर देन 4 एंड k इज लेस देन -4, राइट? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर -4 है, एक्सक्लूडिंग 4 एंड -4। तो अगर तुम 4 के आगे जाओ या तो -4 से नीचे आओ इन दिस रीजन। Hopefully you understood this. Infinity to and 4 to infinity, right, that's right. Okay, and in the next question it will be k square minus 16 must be equals to 0, so k square must be equals to 16। तो यहाँ पे आंसर आएगा k equal to +4 और k equals to -4, एग्जैक्ट 4 पे। जब उसको एक सिंगल रूट आएगा, वन रूट आएगा इक्वेशन, एंड देयर विल बी नो रूट्स बिटवीन व्हाट? कहां पे रूट्स नहीं आएंगे इसके? व्हेन k स्क्वायर -16 इज लेस देन 0 और k स्क्वायर इज लेस देन 16, दैट सिंपली मीन्स k इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4। -4 से लेके 4 तक जो वैल्यूज रहेंगे इस रेंज में, यहां पे देयर विल बी नो रूट्स, राइट? परफेक्ट। सो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिंपल मेन चीज एक तो ये हो गया, नेचर ऑफ रूट्स पे काफी बार कैट में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एंड दूसरी एक चीज है मैक्सिमा मिनिमा, विल डिस्कस दैट विद व्हेन एग्जांपल। That is also a simple concept, but it requires logical thinking। थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ वगैरह भी सोचना पड़ सकता है depending on the question basically। Try for this this quadratic equation and modulus को merge किया है इस equation में। try to get the answer and let me know if you have any answer। x square minus 9x plus mod of k is equal to 0 has real roots है, इतना हमें पता है। how many values can k take? try it for a minute।
x square minus 9x plus mod of k equals to 0. This has real roots. Real roots कब होते हैं? Write this. When b square minus 4ac is greater than or equal to 0. इक्वल टू 0 भी चलेगा. टू रियल रूट्स नहीं बोला है, सिर्फ रियल रूट्स बोला है. दैट शुड नॉट बी लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू. दैट विल डू. So b square is 81 minus 4 into 1 into mod of k greater than or equal to 0. '81 must be greater than or equal to 4 times of what happened. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया. It is expected from your side. .25 4 से अगर मैं डिवाइड, this should be greater than or equal to of k. So what are the values that k takes such that mod of k must be less than or equal to 20.25 and we want the integer value. So definitely 20.25 तो नहीं आएगा. Integer values can k take. Not it. अभी तक किसी का आंसर नहीं. How is it possible guys? What happened मेगा? बोलो मॉड k का वैल्यू 20.25 से कम है, ऐसे कब हो सकता है? If you take the number line 40, you're close enough but you missed one number. Plus 20 minus 20, तो ये सारे आएंगे -1 -2 even 1 2 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव 40 लुक्स राइट. बट तुमने 0 क्यों छोड़ दिया? मॉड ऑफ 0 भी तो चलेगा ना. हमें 20.25 से कम चलेगा तो 0 भी तो चलेगा ना. 0 भी आता है उसमें राइट. सो वैल्यूज दैट k can take is k can take any value which is greater than or equal to -20. equal to भी चलेगा, ओके 20 भी चलेगा, and which is less than or equal to 20. There are 41 such values. So typical question type from CAT, and you'll definitely get some questions like this, and it's not tough at all. It is more of your conceptual understanding. It's really, these are the short questions on algebra you can get in CAT. Definitely you can save on your time and quickly solve such questions, but do it very carefully. Do not make the silly mistakes, okay? Okay, let's move to the last one. This is the last question for the day, but I wanted to discuss one or two things related to this really important question type, which is related to the maxima and minima of this function. And maxima minima पे भी काफी बार academic questions आते हैं. So see if you can try it and tell me the answer. फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. सो पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे डिसाइड हो सकता है एंड हाउ टू गेट दैट वैल्यू.
Megha, minus, what is minus b by 2a? The minimum or maximum? That is not maximum or minimum value. That is the value of x at which that function will be, that equation, that expression will be the lowest. Listen, let's just think about this. 2x square minus 5x plus 7, and let's this as y, or the polynomial p of x. ओके नाउ इसका मैक्सिमम यहाँ पे उल्टा होगा, बिकॉज दिस इज 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट लेटर, बट द थिंग इज दैट इज फॉर श्योर, अगर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो 3 अपॉन उसका रेसिप्रोकल मिनिमम आएगा, एंड अगर ये मिनिमम होगा तो 3 अपॉन दैट मीन्स द रेसिप्रोकल, 3 इज कांस्टेंट एनीवेज. तो जब ये मिनिमम होगा, सो दिस will be the maximum. We'll do that later. Hopefully you understood that what I said. एक का डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 तो मैक्सिमम. ओके ओके, तुमने डेरिवेशन यूज किया, दैट्स राइट मेथड टू डू. ओके, सो द व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? कैन यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू एंड टेल मी क्या आ रहा है तुम्हारे डेरिवेशन के हिसाब से? मुझे कैलकुलेट करके बताओ एक बार. Then we'll have one method and one shortcut for this. Without using derivation, you can also solve this. Because derivation के लिए तो फिर तुम्हें हायर मैथ्स, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे फिर अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो. That's the part of higher mathematics, right? How can we solve this without derivative? Okay, understand one thing. Megha, can I say the graph for, I'm not going to find the roots of the quadratic equation and all. Can I simply say this graph is positive? That simply means this graph will be upward moving. Yes or no? And let's say the roots are alpha and beta. तो जो तुमने अभी बताया ना, दैट इज पार्शली राइट. दैट इज नॉट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. यू कैन गेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग दैट, एंड आई विल डिसाइड कि मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा. ओके, तो नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो ये ग्राफ अगर तुम देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इनफाइनाइट. इधर जाओगे तो ये भी इनफाइनाइट ही आएगा. y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. मिनिमम कब आएगा? इस पॉइंट पे. दिस इज द पॉइंट वेयर विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, राइट. This is the lowest point. Am I correct? So at this point you'll get the minimum value. अब ये minimum value जो होगा ना, wherever the roots, जहां भी roots आ रहे हैं इस equation के, अल्फा एंड बीटा, डजंट मैटर. वो रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन इमेजिनरी रूट्स है, वो ग्राफ कुछ तो बनेगा ना, ऐसे कुछ बनेगा. इमेजिनरी वैल्यूज आएंगे, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, दैट्स इट, राइट. बट दिस विल बी द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दैट ग्राफ, राइट. एंड नाउ हाउ टू गेट द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू कितना रखूंगा. देखो, अल्फा पे अगर मैं x का वैल्यू अल्फा रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बीटा रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा. But this point, the average of alpha and beta, which is alpha plus beta divided by 2, इस एवरेज पे ये लोवेस्ट पॉइंट पे जाएगा. Am I correct?
and we know for the equation ax square plus bx plus c, the sum of the roots alpha plus beta is minus b by a, right? So जो तुमने बताया मेघा, विच इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 में करूंगा तो ये आएगा माइनस बी अपॉन 2a, शायद तुमने ये बताया था, राइट? माइनस बी अपॉन 2a इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। इस वैल्यू पे वो मिनिमम आएगा जब मैं x इक्वल टू इतना रखूंगा, then you will get put x equals to minus b upon 2a, then you will get the minimum value of this equation. Have you understood this? The difference between two things, minus b by 2a is not the minimum value, right? Hopefully you got it, right? Point of minimum, right? That's the point of minimum. So let's try that way. I'll erase this thing and let's quickly finish it now. 2x square minus 5x plus 7 equals to 0. And if I want the minimum value of this function, if I want the minimum value of this, the minimum value of this will be at x equal to kitna? Minus b upon 2a, right? What is minus b upon 2a here? कितना आएगा माइनस बी अपॉन 2a? दैट विल बी 5 by 4. पुट x इक्वल टू 5 by 4. you'll get 2 into 25 by 16 minus 5 into 5 by 4 plus 7. ओके 5 by 4 हमें वहां पे रखना है। हम सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ओके मैं अभी तक क्वेश्चन पे नहीं आया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली इनफाइनाइट है, बिकॉज वाई एक्सिस तुम देखो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, वी कैन नॉट कैलकुलेट, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। फॉर दिस इक्वेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ओके। This quadratic equations maximum is infinite, minimum हम अभी calculate कर रहे हैं, so we can get the minimum value at x equal to 5 by 4. Okay, so Megha, even if you use the derivation use करके तुम्हें point of minima मिलता है, and then you put that value of x in the expression and get the minimum value, right? This is 825 by 8 minus 25 by 4 plus 7. This will be, I'll just double this one, minus 50 by 8 minus 25 by 8 plus 7, 7 8s of 56, 56 minus 25 is 31 by 8. Am I right? Okay, so we got the minimum value for this. Minimum value for this quadratic equation, quadratic expression is 31 by 8. Have you understood this? Right. अब जब मैं ये minimum रखूंगा, you will get the maximum value for this, right? Maximum value of this will be 3 upon 31 by 8, which comes out to be 24 by 31. Am I correct? Am I right? Understood this part? Okay, so forget about this. ये तो question अभी solve हो गया, right? And we got the minimum value as 31 by 8. So Megha, I have one shortcut, last shortcut. Okay.
because there is one other way also I can discuss. This is really means important, depending on values तुम कौन ले सकते हो, तुम्हें क्या use करना है, but definitely this is a bit calculative part, right? Actually ये question इससे भी बहुत easily solve हो सकता है. Okay, so now let me tell you the final shortcut to solve this. Okay, this is the way we can do. एक तुमने पहला ऑप्शन तो तुमने खुद से ही बताया था, डेरिवेशन हम यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगेंगे. इफ यू डोंट वांट टू यूज डेरिवेटिव, यू कैन यूज दिस मेथड जो मैंने अभी बताया. यू कैन पुट -b/2a x का वैल्यू. Okay, and the final shortcut we can have is get the value of b square minus 4ac, okay, which is delta. Okay, and the minimum value for this will be minus delta upon 4. What is the value of b square minus 4ac here? Minus 5 square minus 4 into 2 into 7, which is 25 minus 56 is minus 31, and minus of minus 31 will be 31, it is 4a, I'm sorry, 4a. So 31 minus of minus 31 will be 31 upon 4 into a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, just 31 upon 4 into 2, which is 31/8. Is it easy? So this is the way you can solve this type of quadratic. You would get the minimum value for this type of quadratic equation. Hopefully you understood last part. Right, Mega? So need not to go by derivation, not even you need to use that method minus b upon 2a, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो expression पूरा solve करना पड़ेगा तुम्हें, right? And if you know this part, then you can simply do it and it will really save on your time. Yes, that's very easy, right? And as this is the last question for the day, so we'll discuss one more thing, last final 2 minutes, okay, for this type. We call this as a perfect square. ये ऐसे जरूरी नहीं है तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, ये कहीं और भी तुम्हें काम में पड़ सकता है, depending on the scenario you can use this. Okay, the other thing you can do is just write this equation as I can write this as 2x square minus 5x plus 7 equals to 0. Then I can write this as root 2x whole square minus 5x plus 7 equals to 0. I'm going to try to write this equation in the form of a plus b whole square. Okay, what do you think? क्या करना चाहिए? मैंने a plus b whole square लाना है तो मुझे a square लाना पड़ेगा plus 2ab सॉरी माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे a minus b whole square लाना है मुझे, minus 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्म में लिखने की हम कोशिश करेंगे. दैट्स इट. ओके, तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज रूट 2x होल स्क्वायर. सिंपल एडजस्टमेंट, टिपिकल एडजस्टमेंट है एंड इट विल लुक टफ इनिशियली, बट द थिंग इज ये हर बार सिमिलर फ्रंट पे ही हम एडजस्टमेंट करते हैं, सो इसलिए ये भी तुम्हें इजीली याद रह सकता है. ओके, सो आई कैन राइट दिस एज 2 into 5/2 इंटू मुझे रूट 2x लिखना है तो मैं रूट 2 भी लिख देता हूं. यहाँ पे मैंने 2 रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/2 एंड उसके बाद आता है 7. ओके, तो 5/√2 5/2√2 का होल स्क्वायर हम करते हैं. 5/2√2 होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 25/8. So I'll write 25/8 here. 25/8 मैंने कैसे लाया?
डिपेंड्स ऑन वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, बट अगर इजी वैल्यूज रहते हैं तो ये भी बिल्कुल इजी है। 5/2√2 का होल स्क्वायर ये लिया मैंने 25/8। नाउ यहाँ पे 7 था, तो हम क्या करते हैं, अभी 7 में से 25/8 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि वो तो मैंने ऐड कर दिया, वी आर सपोज टू ऐड +7 आफ्टर दैट, आउट ऑफ विच मैंने 25/8 ऐड किया। 25/8 इज ऑफकोर्स 3.25, राइट? और 25/8 is nothing but 3. Let's not get into the point. I'll just subtract 7 minus 25/8. 7 8s are 56, which comes out to be 31/8. तो 25/8 अगर मैं लिख दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख देना चाहिए 31/8, एंड ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 7 है। दिस इज नथिंग बट 7। मैंने 7 को स्प्लिट करके 25/8 एंड 31/8 लिखा है। ये लास्ट पार्ट समझ में आया तुम्हें मेगा? यस। सो अभी अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे, दिस इज √2x माइनस 5/2√2 होल स्क्वायर प्लस 31/8। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि हम इसको पहले हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा और कांस्टेंट में से कुछ पार्ट अलग से रख दिया, राइट? तो मेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर और इट कैन बी 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यू कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर कैन बी 0। अगर ये मैं 0 कर देता हूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा 31/8। अब यहां पे ना मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फॉर्मूला यूज किया, ना ग्राफ यूज किया, ना हमने सम ऑफ द रूट्स यूज किया। दिस इज सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड लॉजिक टू गेट द मिनिमम वैल्यू, right? Hopefully you understood. So we do have 3-4 methods to solve such type of questions. Whichever you feel easy, you can use that. Okay, so that's it for the day. This was the last question. So that's the point. These are the points I wanted to discuss about the quadratic equation. Tomorrow we'll be having the higher order polynomial, and after that we'll be having functions and mixed practice of algebra. So be with me. That's it for the day, guys. If you want to attend the plus sessions, you can quickly go and download this. Just tell me, Megha, just a minute, listen. What is the maximum value of I'm not going to address your. Okay, so the Megha, the point is, for any quadratic equation, for this quadratic equation which was 2x square minus 5x plus 7, if we draw the graph, this will be the minimum value, maximum will be infinite. तो हम मैक्सिमम क्यों कैलकुलेट करेंगे? सॉल्व करने की जरूरत है क्या मैक्सिमा के लिए? हमें सिर्फ मिनिमा कैलकुलेट करना होगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? होपफुली यू अंडरस्टूड एंड योर डाउट इज क्लियर, राइट? एंड फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन सिंपली गेट, बिकॉज हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, राइट? सो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इसका मिनिमम तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड क्यों आएगा? बिकॉज ये 3/∞ हो जाएगा। Are you getting this? Right. Is your doubt clear or you still have query? Yes, okay, that's good.
That's it for the day, guys. Good night. Bye bye.